huh? Right. So just gonna quickly tell you what are we going to do for today's session. Meanwhile, if you guys can let me know कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं. I'd like to talk to you a bit. Right. हाँ जी. So you guys can actually unmute yourself. मैंने option on कर दिया है. If anyone wants to talk, then you guys can start ahead. Hi Mihir, let's start with you. Yes. How are you doing? I'm very good. What about you? All good, all good. Thanks for asking. And I believe we are live on YouTube as well. So hi Anant, hi Tanish. I'm sharing the Zoom link in the YouTube chat as well. So if you guys want to join in the Zoom sessions, visit the link. Just gonna quickly mute everybody, and I'll let Mihir stay unmuted. So I'm just gonna chat with Mihir a little bit. Meanwhile, everybody is joining. Yeah. So Mihir, what's up with you? What is going on these days? Are you preparing for any interviews? Actually, I have recently cleared my Group 1 of CA Intermediate examinations, and I'm looking towards to clear my Group 2, and then I will be going for my articleship. Okay, awesome. What is the expectation from today's session? Ma'am, this is my first session, so I don't know what to expect actually, but yeah, I'm expecting something good, so something new to learn. That's it. Awesome. So the idea for today's session is I'm just because campus placements are going to happen soon. So I thought it'd be a nice way to, conduct a few mock interviews. So we'll get to see a few mock interviews of if anyone's, willing to volunteer here. I'd like to take mock interviews and general basic guidelines I'll be giving for interviews. Right. So initially, I'd obviously like to know a bit more about whosoever has joined. So, hi, Ravi. Let's talk to Ravi now. Ravi, I have. Hello, ma'am. Hi, Ravi. How are you doing today? Ma'am, as well, I am good. How's you? How's the world doing? All good. So, Keshav, online YouTube पे आप chat करो. Just join the Zoom link that I've sent you. एक बार उसको join करो. मैंने Zoom की chat पे भी YouTube की chat पे भी भेजा है. Alicia will be coming to you as well. Let's talk to Ravi. Ravi, क्या status है अभी? Qualified, intermediate? Ma'am, I qualified intermediate of both group, and I am preparing for interview of internal audit. For internal audit. Have you taken any master classes of Thinking Bridge? Yeah, I taken interview master classes and also articleship beginner module. Okay, awesome. Have you been applying lately for? Yeah, I applied for many of them. The interview which was also conducted tomorrow. Tomorrow you're having an interview? Yeah. Okay, awesome. So would you be willing to give appear for a mock interview right now? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. That's why I'm also coming. That's awesome. Looking forward to it. Let's talk to Alicia. Hi, Alicia. What's up? Hey, Alicia. Can you hear me? I cannot hear you. I think there is some internet connectivity problem. Fine. So, Alicia, what you can do is you can turn off the video and then speak. Maybe the connection will be better. Don't mute yourself. Just switch off your video and then talk. I think that'll be better. Alicia, you have. Oh. Yeah. Can you say something? Okay, I think I'm not able to develop connectivity with you, Alicia. Try connecting from a different device or use a different network, or try to, move to a place where the network connectivity is better. That'll be better, I believe. Hi, Keshav. I'm good. How are you? Thanks for asking.
Long time no see, huh, Keshav? How's the preparation going on? Okay, ma'am, I'm not able to join from the app. Okay, not able to join. So you guys have to join from Zoom. Either try to use Zoom, correct? Or use Thinking Bridges app. Either way, it should work because a lot of other people have. Have you guys faced any difficulty while joining the session? Okay. Keshav, क्या problem आ रहा है? Ma'am was able to join through the in the Zoom link only, ma'am, through the YouTube comment section. Through the app, we were not able to join, ma'am. Oh, I think that's what other people might also be facing because. Yes, ma'am. It's only got bit delayed, ma'am. We were waiting for it. That's sad. I've also shared the link with the in the Telegram group. So if any of your friends are wanting to join, maybe you can share the link directly with them. So I'll share Yes, in the ma'am. chat also. If any of your friends are willing to join, just share the link with them. I think there is some problem in the app. Oh, yes, ma'am. Okay. And I've shared the link on the Telegram channel as well. So Yes, ma'am. okay. We'll circulate that. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much. So let's start with today's session. So who all are preparing for interview? If you guys would like to confirm, there is Ravi, there is Alicia, I believe, because she mentioned that she's preparing for, she's looking for articleship. I believe she is also preparing for interview. So Alicia, I would really like to take your mock interview as well. और यहाँ पे mock interview कौन-कौन देना चाहता है? Please give me a thumbs up in the chat. Give me a thumbs up. Mihir, would you also like to give mock interview? Oh, awesome. Cool. Who else? We have Ravi, we have Mihir. Have you prepared any questions though, Mihir? Okay, so it'll be, we'll keep it like absolutely impromptu for you and let's just see, okay? Ravi, Ravi, I have your yes. Anybody else? Tanishk, Steffi, Paras, Sankalp, anyone willing to give a mock interview? That'll be actually really fun because you'll get to learn, you'll get personalized feedback. क्योंकि हर किसी की स्टोरी के हिसाब से आपको आंसर्स अलग अलग बोलने पड़ते हैं. And if you have a third person's review on your answers, you'll be able to improve your answers. So it's better, मतलब बढ़ चढ़कर मैं recommend करूंगी कि mock interviews दो. यहाँ नहीं देना, अपने किसी के साथ भी आप comfortable हो, कहीं भी देना है, but do give mock interview before your final interview. What happens is otherwise you'll go for the final interview, right? And the first interview that you're going to give, you're absolutely going to, like not like that experience. और वो खराब ही होता है. More often than not, the first interview is not what you expect it to be. So it's better that you give mock interview first so that you're absolutely prepared for the final round, the judgment round. Okay, right? So अगर आपको यहाँ नहीं देना, and if you have your interviews, coming up in the coming days, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ प्रैक्टिस कर लो, बट जरूर करना. मार्क माय वर्ड्स, you'll have a much better experience if you're preparing, you're giving a mock interview first. ऐसे ही थोड़ी ना, हमने सुना होगा ना आईएएस के इंटरव्यूज वगैरह इतने फेमस होते हैं मॉक इंटरव्यूज. तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सच अ बिग इवेंट, राइट? क्लियरिंग द इंटरव्यू हैज वो तो उनका तो इंटरव्यू के भी मार्क्स लगते हैं. अपेरेंटली हमें जॉब मिलता है और उनको उनका सर्विस में एंट्री मिलता है, राइट? सो like the way they prepare for their interview, I think आपको भी उतना ही बड़ा इवेंट इसको कंसिडर करना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, right? So once again asking anyone else who wants to volunteer for today's mock interview session, or we're going to jump right into it. We're going to start with Ravi, and बीच में कोई join करना चाहेगा? Navneesh wants to give interview, so you can raise your hands and let me know. Okay, so Ravi, we're going to start with you. I would, usually prefer to have a resume, but I'm just going to tell you that, give me enough information so that I can make questions from your answer on the spot. Okay, right? So coming up, mock interview of Mr. Ravi Roshan. Ravi, I have unmuted you.
Camera is not working sometimes. No problem. We'll take it out. Okay. So Ravi, कौन सी firm में interview देना चाहते हो? Ma'am, it's a Baker Tilly interview It's a Baker Tilly interview. Okay, awesome. Which profile? for internal audit. Okay, internal audit, Baker Tilly, awesome. एक काम करते हैं, Baker Tilly में आपका final interview है, so हम पहला interview कहीं और देते हैं. Let's go with Okay. okay. Okay, ma'am. PwC internal audit, and we have Ravi Roshan in the house. So, good morning, Ravi. How are you doing today? Good morning, ma'am. I am fine. No. Could you please start with your introduction? Ma'am, my name Ravi Roshan. I am from Rohtas, Bihar, and I studied from Sasaram itself, and I studied from Sasaram itself, and also I served as a volunteer in the Humanity Trust, which is also in Sasaram, and currently I am looking for articleship in an organization where I can enhance my knowledge and contribute toward the growth of firm. Okay. Why did you choose CA? Ma'am, I chosen CA for understanding business functioning and audit, immense knowledge of taxation, audit, and also my favorite subject is accounts. That's why I chosen CA. Okay, fair enough. So you know that Ravi, there are so many profiles for pursuing your articleship in. There is statutory audit, there is internal audit, right? And so why didn't you go for statutory audit? Why do you want to do your articleship in internal audit? Ma'am, after qualification of Group 2, I searched various profile in just like you said, statutory audit, taxation, and internal audit. But when I found internal audit, in which I studies management, functioning, procurement, and also something which attracts me. That's why I will enjoy to go with internal audit. Okay. Can you tell me the difference between internal audit and stat audit? Internal audit is basically implemented by the management. It's the responsibility of management for functioning of internal control and safeguarding of asset compliance with laws. But statutory audit is external audit, which auditor will came to companies and work and make a financial statement, who will give opinion on the financial statement of the company. Okay. Tell me a little bit about your family background. Who all are there in your family? Do you have any siblings? What are they doing? Ma'am, my family background is just my father is a businessman and my mother is a housewife, and I have one younger sister and I have one elder sister as well, who is Okay. also preparing What is for. your elder sister doing? Yeah, ma'am. Can you What is repeat? your elder sister doing? He is preparing for examination, also UPSC examination. Oh, okay. Why didn't you, walk on the path on which your sister was walking? Why didn't you go for UPSC? After qualification of 12th, when I looking for various profile which should I choose commerce, science, then I found commerce is more attracts me for business, as my father is also in business, so I decided to go with commerce. That's why I'm. Okay, okay. What kind of business is your father in, and what do you do there? Do you contribute to his business in any sense? My father is just a wholesaler shop of groceries, Okay. and I also whenever I get time, then I spend here in vouching and something. Okay, you do vouching there. Yeah, Could you please explain vouching me and how exactly you carry out vouching at your father's store?
Here there is just a manual vouching by handling client and this Mm-hmm. what type of item they should buy and what. So how do you manage your inventory? Do you have a software, or is it Mm, like in the books only? yeah, it's books only. Just not too much, but Mm-hmm. So, do you plan to join your father's business? Why do you want to, like, be a part of chartered accountancy profession? You can obviously take your father's business to next level, and you're young and you're energetic. I believe you can contribute so much to your father's business and grow it to a great length. Why not that business? Why yeah, CA? ma'am. But I have today, right now, I am not decided that kind that Okay. I will going to do my father business and but I am trying to I my decide my future plan is to go with business but something else, not as a shop or Okay. Uh, can you describe what are substantive tests? substantive test Yeah. in audit Yeah. course. Right. Sorry, ma'am. It's okay. No problem. So can you please tell me the steps to prepare and perform internal audit? Yeah, I can. Mhm. Firstly, there is a walkthrough of the organization, how the process are initiated, just like if s- how the process are initiated in the management. If I said something which is mm, getting authorized by someone, how the process, mainly how the process are working and what is the control are implemented here, how the risk factor is getting mitigated, and what are the responses, and after those analysis we respond toward the risk and we put more control there. Okay. Do you know a little bit about Excel? Have you used this software? Yeah, ma'am, I also about classes of skill 91. Okay. So explain the VLOOKUP formula to me. We look up formula. Ma'am, I can apply, but can I explain? Okay, explain it. Apply it. Apply it in a situation. How will you actually use it? uh, by by taking, if there is a chart, whatever tight table or table is there, we just use a VLOOKUP function and just indication that they are given by Excel. We entered some type of from the from there also selected the some cells and we apply the VLOOKUP formula. But here is one exception that we have to choose leftmost column there, Hmm. and we can give any result from the table of leftmost column. Okay. Have you used XLOOKUP also? No, ma'am, I haven't. Okay. How do you insert pivot table? By clicking insert table, there are one window is insert pivot table. Pivot table is just for extracting the data where when there are too much data which is not relevant for the user, then we use to extract Okay. information for the user. Okay. Um, Tell me a little bit about your strengths and weaknesses. My I firstly start with my strength. The I have my strength is to be positive toward work and never give up attitude and hard working. And my weakness, which was I was not able to communicate with someone. There is my major weakness, but I am trying to mitigate it.
How? By recently I've done ITT and orientation classes where I can communicate with various person, and also I'm trying to But that's mandatory, look. right? You don't have. That's mandatory. That's why you're doing it. Yes, ma'am. Yeah, it's What also extra are you mandatory, but doing to improve your weakness? What extra are you doing mm, to improve your weakness? I'm entering in business and handling some customers also from talking them by this. How I motivate. Okay, fair enough. Okay, this is a very straight question, and be very honest. Uh, Ravi, hundreds of applicants have applied for this position. They're all hardworking. They have the knowledge, right? Why should we choose you over other candidates who have applied? What exceptionally well you can do that others can't do? How do you stand out among other people who have applied for the same position? Ma'am, actually, I found this question very critical for giving answer, but I am trying to give the skill required for that position, just like internal audit. I think I have all the skills for that. That's why one will select. Okay. So this will be my last question. Where do you see yourself 5 years down the line? If I'm trying to say this question as a long-term goal or short-term goal as a My question remains the same. Where do you see yourself 5 years down the line? आप 5 साल के बाद आपने कुछ अपना इमेज प्लान किया होगा ना, तो कैसे इमेज आती है जब आपको सोचते हैं यार मेरा फ्यूचर ऐसा होगा? So what do you envision? my my first goal is to clear CA in first attempt, and after that I want to explore the business functioning of the business, and after that after 5 years I will try to something something launch some new business which uh, business I'm going to business. I want to go in business. Okay. Okay. All right, awesome. Thank you so much for your time. Do you have any questions for me? Yeah, ma'am. I have one question. What was you expecting when you were taking my interview as a mock interview? Okay, Expecting वो तो from मैं me? feedback में बताऊंगी. अभी आपका proper formal interview चल रहा है. You can't ask this question. Think of No, ma'am. it I like have I'm a any real question. HR. Okay. Yeah, ma'am. वो तो मैं obviously I'll give you proper feedback. But yeah, other than that, you should have a list of questions that you can ask from the HR that will, pique their interest in you. कि हाँ यार इसने अच्छा question पूछा, intellectual question पूछा, right? So anyway, still like बहुत बढ़िया, and kudos to the confidence that you carried throughout the interview. Everybody, please give a round of applause for Ravi's confidence. Let's praise him for taking this initiative to speak in front of so many people out there. So भाई क्लैपिंग चाहिए, शाबाशी चाहिए. चैट में कहाँ हो चैट? थोड़ा सा मोराल Thank you, बूस्ट ma'am. करो रवि का. Great one. Yes, good one. Anji, YouTube. Khushi from YouTube, you can join the live session on Zoom, and the link is there. It's in the comment section, so join from there. Chalo, well done, Ravi. Well done. Everybody is saying well done, Ravi. आ जाते हैं अब Thank you, feedback. ma'am. Thank you, everyone. Yeah. So अच्छा रवि, पहले ये बताओ कि this first interview था, live का first interview था? No, ma'am. एक और मैं दे चुका हूँ पहले. एक और दे चुके हो? मतलब select mock दिया है या फिर final दिया है? फाइनल दिया था. फाइनल दिया था. ओके, कुछ रिस्पॉन्स आया उनसे? आज ही था, आज सुबह. अच्छा, आज ही था. ओके, चलो बहुत बढ़िया. अभी 2 टाइम प्रैक्टिस हो गया. चलो, अमेजिंग.
फीडबैक पे चलते हैं. सो मैं पूरा फीडबैक दूंगी आपको वन बाय वन, जो भी आपका आंसर था, एंड किसी और के भी कुछ भी, मतलब थोड़ा अच्छा सा फीडबैक जिससे रवि इम्प्रूव कर पाए. किसी का भी कुछ भी फीडबैक है, अपना पहले आंसर एक लिख लो कि यार मुझे ऐसा लगता है कि रवि यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे, बिकॉज आई बिलीव, मतलब शायद कुछ पॉइंट्स मैं भी मिस आउट कर दूं, तो योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो हेल्प इन गिविंग रवि अ प्रॉपर फीडबैक. करेक्ट. मिट्टी ने भी कुछ यहाँ पे फीडबैक लिखा हुआ है. तो विल गेट बैक टू दैट. सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से. ठीक है, इंट्रोडक्शन रवि मुझे बहुत ब्रीफ लगा. आप इंटरव्यू मास्टर क्लास देखोगे तो हमने इसमें प्रॉपर बताया हुआ है, सिंस यू आर अ स्टूडेंट आल्सो ऑफ इंटरव्यू मास्टर क्लास में, हमने प्रॉपर बताया हुआ है किस अप्रोच से आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लान आउट करना चाहिए. ठीक है, अगर मतलब मैंने आपका पूरा इंटरव्यू सुना, मैं स्पेसिफिक आंसर वाइज तो आपको फीडबैक दूंगी ही, बट ओवरऑल द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यू वाज आपने शायद प्रैक्टिस नहीं करी है अपने आंसर्स की ज्यादा. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यस मैम. नहीं करी है ना. सो अभी अभी कल इंटरव्यू है, तो आज रात तो पूरा इसी पे स्पेंड करना है, अपने आंसर्स को एनहांस करना है, जो भी अभी ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक. सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना लाइव सेशन, अपना जो परफॉर्मेंस वाला पार्ट है एंड द फीडबैक पार्ट, उसको वापस आके जरूर देखना. आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे नर्वस हुए, कैसे आपने बोला, राइट, एंड कैसे आपने रिस्पॉन्ड करा क्वेश्चंस को. तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो फीडबैक आपका पर्सनल फीडबैक होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छे से आप ही खुद अपने आप को जानते हो. करेक्ट. तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार मेरा ये लेवल था, एंड देन जब धीरे धीरे आप इम्प्रूव हो गए, आपको अपने आप में चेंज दिखेगा, आपका ग्राफ जो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा. करेक्ट. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आज आप अपना जो इंटरव्यू अभी 10-15 मिनट का आपने दिया, आप उसे वापस आकर देखें, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक दैट आई विल बी गिविंग यू, एनहांस योर आंसर्स एंड प्रैक्टिस देम. कितने बजे भी है आपका, जब मतलब फॉर एग्जांपल कल लंच टाइम पे है, उससे पहले आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने हैं सारे आंसर्स. ओके, राइट. देखो, इंग्लिश तो छोड़ दो, दैट इज लाइक अ सेकेंडरी ऑप्शन. फर्स्ट कम्स नॉलेज, फर्स्ट कम्स टेक्निकल नॉलेज. रिवाइज नहीं किया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है सब्सटैंटिव टेस्ट का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल ऑडिट. तो आपको रिवाइज भी करना है अपना सिलेबस भी. ठीक है. तो नॉट जस्ट द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट कि हाँ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने किस तरीके से बोलना है, दैट इज ऑल देयर, बट एट द सेम टाइम टेक्निकली यू शुड बी वेरी वेरी साउंड. क्लासेस पूरे कर लिए आर्टिकलशिप मास्टर क्लास के? नो मैम, अबाउट 60%. चलो कोई बात नहीं, तो उनको जो जितना देख लिया है ना, उनके बस एक बार ब्रश अप कर लेना कि क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो उसको बस पूरा अच्छे से ब्रश अप कर लो, ताकि आपके कल जो है कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश रहे. ठीक है. एंड दे डोंट एक्सपेक्ट कि भाई आपको पूरा इंटरनल ऑडिट का A to Z पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप आर्टिकलशिप पोजीशन में जा रहे हैं, विच इज लाइक एन इंटर्नशिप पोजीशन. सबसे ज्यादा चीज जो आप में देखते हैं वो है कि क्या आप में सीखने की इच्छा है क्या. एंड ऑब्वियसली सम टेक्निकल नॉलेज दे ऑब्वियसली वांट टू सी कि आपके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज डेफिनेटली होना चाहिए, कि आपने एटलीस्ट आपने जितना अपना करिकुलम में से पढ़ा है उतना तो आपको अच्छे से आना चाहिए हिसाब से. ठीक है. कमिंग टू योर इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन अभी भी आप लिखते जाओ अपना फीडबैक, नहीं तो वीडियो दोबारा आकर देख लेना. इंट्रोडक्शन ऑलवेज शुड बी इन 3 parts, wherein you start with your name, right, and then you talk about the recent accomplishment. आपने भी रिसेंटली इंटरमीडिएट का ग्रुप क्लियर करा है, बोथ ग्रुप क्लियर करा है, उसके बारे में बात करो. एंड इट हैज टू बी इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है. तो अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट क्लियर करा, शायद जनवरी में फॉर एग्जाम्पल, या फिर मार्च में अपने कॉलेज का सेकेंड ईयर कंप्लीट करा होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा होगा, या फिर CA फाउंडेशन कंप्लीट करा होगा 9 months अगो. जो भी है क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा अपना एजुकेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड बता दो. कहीं पे अगर आपने इंटर्नशिप करी है 1 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो. Then you move on to your family background. ठीक है, wherein you tell आपके पापा क्या करते हैं, your mother, what does she do, and then you have to talk about your siblings also, like you said that your elder sister is preparing for UPSC, so you can mention that. And do expect a question कि आपने क्यों नहीं UPSC प्रिपेयर करा. तो जो आंसर अभी आपने दिया वो ठीक था, बट बहुत प्रिसाइज था. ठीक है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज्यादा बात करें. ठीक है. एंड देन यू हैव टू गिव देम द वर्ड्स जिनमें से वो क्वेश्चन पूछे.
ठीक है। तो आपको उन्हें मतलब जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतना ज्यादा जो है आपको उसे अपनी स्टोरी में इंटरेस्टेड बनाना है, राइट। यू डोंट वांट टू बोर द इंटरव्यूअर, यू हैव टू मेक हिम इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, सो इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी। क्योंकि यार ये तो आपकी लाइफ की कहानी है ना, अगर मैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बोलूं, आप अपनी लाइफ की कहानी सुना रहे हो अपने इंट्रोडक्शन के थ्रू, राइट। मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट मेक हिम लव हिम और हर, जो भी होगा, मेक हिम लव योर स्टोरी, ठीक है यार। उसे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए यार, बढ़िया स्टोरी आपकी लाइफ की, करेक्ट। So after talking a bit about your family background, you can move to the hobbies section. Like what do you do in free time? Because सबके पास फ्री टाइम होता है कभी ना कभी, तो वो फ्री टाइम में क्या करते हैं, उससे पता चलता है कि what are your likings and dislikings, right? If there is someone who loves to write, that is going to give me an impression that this person is a writer, this person reads well, this person writes well, right? Somebody किसी का है जो क्रिकेट खेलना हो सकता है, for example my brother plays cricket every weekend, so he mentions in his hobbies that cricket is his hobby and he plays for a team, etc. So what is this giving me an impression that this is a sporty person, he is very active, right? तो अपना इंटरेस्ट को अपनी हॉबीज के थ्रू बताना है। और हॉबीज भी ये मत बोलना मुझे तो सीरीज देखना पसंद है भाई, मैं तो सारी बिंज वॉच करी हुई है, स्ट्रेंजर थिंग्स तो मैंने रात रात में निपटा दी थी। नो, ठीक है, यू हैव टू गिव देम द इम्प्रेशन दैट दिस पर्सन एक्चुअली इन्वेस्ट इन राइट स्किल्स। आप स्पोर्ट्स करके अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रीड करके अपने इंटेलेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पेंट करके अपने आर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जस्ट गिव देम बेसिकली हमें उन्हें ये बताना है कि भाई हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं, ठीक है, हम नहीं करते टाइम पास, हम नहीं देखते इंस्टाग्राम की रील, हम देखते हैं, हमें सबको पता है कि हम इंस्टाग्राम की रील्स पे, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट करते हैं, बट उन्हें नहीं बताना है कि यार ये मेरी हॉबी है कि मैं एक दो घंटे बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा हूँ या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा हूँ। दैट्स नॉट व्हाट वी डू, ओके। सो 3 parts. You start with your introduction, accomplishments, right? Recent reverse chronological order, talk about your family, and then end it with your hobbies. Hobbies में selective hobbies हैं, टीवी देखना, काउच पे इंटरनेट सर्फिंग करना, please do not mention all of this, ठीक है। चैटिंग करना, मैसेजिंग करना, no, these are not hobbies. ये please refrain from saying all of this, okay? So finishing up your introduction here, मैंने आपसे पूछा था कि why CA, आपने बोला कि मतलब मेरे को अकाउंट पसंद था। सो व्हेन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, राइट, मेरे को रेगुलर टायर्ड बोले थका हुआ आंसर नहीं सुनने का है, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स में फंक्शन है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है भाई, ठीक है, सबका ही होगा ना, लार्जली कहीं ना कहीं अकाउंट्स में होगा, नहीं तो बिजनेस में होगा, नहीं तो नंबर्स में होगा, कहीं ना कहीं से। बट यू हैव टू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग। हाउ आर यू गोइंग टू मेक दैट इंटरेस्टिंग? वाई सीए? सबसे पहले तो सोर्स बताओ कि यार आपको सीए के बारे में पता कैसे चला। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता चला, लाइक देयर वाज अ कजिन ऑफ माइन हु वाज ऑलरेडी परस्यूइंग सीए, I got introduced to CA, and that's when I read about it. I asked my teacher, I took some counseling, and that's when I was absolutely amazed that what a respectable profession this is, and it'll be an absolute honor for me to pursue it and be a part of this fraternity which is so respected, right? Obviously in terms of financial independence वो सब ठीक है, वो नहीं बोलने का कि बहुत पैसा है सीए में, वो मत बोलना, ठीक है। but you should like talk about कि यार the amount of knowledge, the amount of experience that one goes through in their CA journey, that's actually incomparable, and that's what I want to pursue. Look at the tone that I'm using. मैं ऐसे tone use कर रही हूँ कि यार मैं बहुत ही मतलब I look up to this course so much. You have to, keep the course on a pedestal that you're absolutely inspired and absolutely amazed कि भाई ये क्या profession है, बढ़िया सा, and मुझे इसमें I want to contribute in it, right? In terms of कुछ keywords use कर सकते हो, उसके around story कर लेना. Use the words like the amount. It's a very respectable profession and one of the highly respectable profession in India. Definitely, the amount of experiences one goes through in their CA journey, it's incomparable, and it'll be an absolute delight to go through all those experiences, the ups and downs, right? And then you can also talk about the amount of technical knowledge and exposure then that one qualified CA has. And I absolutely look up to the knowledge, right? You can also tell कि यार मेरे known में कोई CA है, he's so knowledgeable and I would like to be like him, है ना? सिर्फ आपको रेफरेंसेस देके थोड़ा सा स्टोरी को और दमदार बनाना है, वजन डालना है स्टोरी में, ठीक है। बस ये नहीं कि हाँ जी मुझे अकाउंट्स पसंद है। अगर अकाउंट्स पसंद भी है तो ये बोलो कि यार देखो बच्चों को कुछ नहीं पता होता 10th में,
until and unless आपके like घर में अकाउंट जो है उठते बैठते होता है, तो उसके बाद स्टोरी होगा कि यार मैंने तो बचपन से देखा ही अकाउंट्स है, मेरे घर में सब अकाउंट्स में से हैं फॉर एग्जांपल, कि ठीक है मैंने तो देखा ही अकाउंट्स है, एंड दैट्स व्हेन माय इंटरेस्ट आल्सो got into accountancy. I have been fascinated by numbers since my childhood, and I wanted to do something in this regard, and that's how I chose this profession, CA. Correct? So this is how you can frame your answer. Just add little weight to your answer. Simple, I love accountancy, not a very, like not a very bazandar answer. Okay? Correct. Can you tell me the difference between stat audit and internal audit? That was my next question. I believe you did not do justice to that question. Reason being, मतलब implemented by management, मतलब मुझे सिर्फ एक ही बात बार बार repeat सुनने को मिल रही थी, that हाँ implemented by management etc. I believe you could have added more technical points. आपको याद होगा इंटरमीडिएट में प्रॉपर डिफरेंस करते हैं अपन टैबुलर फॉर्मेट में विद प्रॉपर हेडिंग्स की ये पर्टिकुलर्स हैं, इसका ये डिफरेंस है. यू कुड हैव इजीली टॉक्ड अबाउट दैट. आराम से 3 मिनट 2 से 3 मिनट आप खींच सकते थे उस आंसर को, बट यू ओनली स्पोक फॉर अ फ्यू सेकंड्स. आई बिलीव यू कुड हैव एडेड. उससे क्या होता है, पता चलता है कि हाँ यार पता है इसको दैट दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. ठीक है, अभी मुझे लगा कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें पता है, तो एड डेप्थ टू योर आंसर. ओके, why not UPSC? Commerce attracts me more. Commerce का ही, commerce में भी पार्ट होके भी UPSC करते हैं लोग, right? People also choose optional में commerce. So that was, I believe, like not the appropriate answer. आप बोल सकते थे कि it's my sister's dream. I do not resonate with it. I am more about finance and numbers. I think accounts is my calling. ये बोल सकते हो. I believe. And when I got to know about this chartered accountancy profession and the things that I'll get to learn in this profession, that absolutely amazed me, and that's how I chose to be a part of this profession. ऐसे ऐसे करके आप just like add more details, add more data to it. Then why not father's business? You did mention one thing कि मैं vouching करता हूँ, but हाँ manual vouching. तो ऐसे वर्ड्स मेरे को मत दो कि मैं आप पे क्वेश्चन पूछने पे मजबूर हो जाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने आप को फंसा लिया. मैंने पूछा वाउचिंग कैसे किया आपने, तो आपने बोला कि हाँ मैनुअल वाउचिंग किया. अरे आई नो मैनुअल होगा, बट व्हाट वाज द एंटायर प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप बताना था. फिर या तो बोलो मत कि मैंने करा है. ठीक है, बट इफ यू आर गोइंग टू गिव मी वर्ड्स, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ग्रिल यू ऑन दैट. तो द इंटरव्यूअर आल्सो इज गोइंग टू डू द सेम. ठीक है, तो why not father's business? Why CA? I think आप इसमें बोल सकते हो that my father's business, I want to like gain सबसे पहले enough knowledge. ठीक है, आप बोल सकते हो that I want to first gain enough knowledge in this profession, and if at all in future I believe that I have earned enough. I've gained enough experience and exposure and knowledge, then probably I might think, but currently that's not the plan. ऐसे से आप बोल सकते हो. ठीक है, so just add more details there. आपने बस ये बोला कि नहीं मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है. वेग आंसर है, so don't be like too vague. Just tell them कि firstly I want to gain knowledge and I want to explore uncharted territory, work with new people, have new experiences where I'm all by myself. Take up, go on audit assignments, visit different cities. I want to gain all of that experience. I don't want to straight up, jump into my father's business right after my 12th. So just add किया मुझे यार बहुत सारे uncharted territories को explore करना है, मुझे बहुत सारे experiences gain करने हैं अभी. After that, I will think about it. But first, my priority is to get articleship in a good firm, learn something in these 3 years, prepare for my finals, appear for my finals, qualify CA, get a job, and then after gaining all that experience in this profession, then maybe I'll think that and तुम ये भी बोल सकते हो कि अभी my father is self-sufficient, he has staff, he doesn't really need me, and that's why I'm free to pursue my passion, and that's why my father is also not even forcing me to be a part of his business. So just add couple of details there. Okay. एक्सेल में, हाँ एक्सेल में आपको शायद मैं डेटा दूंगी तो मुझे पता है कि आप कर लोगे, बट यू कुड नॉट पुट दैट थॉट इन वर्ड्स. मैंने आपसे पूछा कि वीलुकअप कैसे करना है, तो वीलुकअप में आपको फिर बोलना चाहिए पूरा कि एरे टेबल होता है, एरे होता है, उसमें से सेलेक्ट करते हैं,
जो ब्रेकडाउन है ना फॉर्मूला का रवि, वो बताना पड़ेगा वहां पर। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फॉर इक्वल्स टू बी लुकअप लगा दो, जो क्योंकि आपने पता क्या बोला, आपने बोला कि आपने जो है कि टेबल यूज कर लो और एक्सेल के इंडिकेशन के हिसाब से लगा दो। नो, ऐसे तो कोई भी देख लेगा। मुझे ये थोड़ी ना देखना है कि इंडिकेशन क्या बता रहे हैं, मुझे तो ये देखना है कि रवि को पता है कि नहीं पता है। मुझे तो पता है, इंडिकेशन तो कोई भी कर लेगा। यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि वीलुकअप लगाते समय जो है 3 कंपोनेंट्स हैं उस फॉर्मूला के। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू लाइक सेलेक्ट द सेल विच यू वांट टू फाइंड, देन यू हैव टू सेलेक्ट द एरे, ठीक है, कहाँ से आपको फाइंड करना है, क्या आपको फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू पुट द कंडीशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ऑल्सो, ठीक है, कि फॉल्स है तो क्या मैच आएगा, अगर ट्रू है तो कौन सा मैच आएगा, एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर इन एग्जैक्ट मैच चाहिए, राइट, वो सारा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। सो जस्ट बी मोर वोकल विद व्हाट इज गोइंग इन। मुझे पता है यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा होगा बट वर्ड्स में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो Yes, पुट ma'am. ऑल ऑफ दैट इन वर्ड्स, राइट। Then strength and weakness. I think this was fairly good, but जो weakness वाला था, don't just say that I was not able to communicate properly. Just say that I was a very, I am a very introverted person, and I used to find it difficult to communicate with people, but now I'm working on it. ठीक है, आप बोल सकते हैं I'm part of, interview masterclass where I get to talk to new people, and I have started going to आई स्टार्टेड गोइंग टू, जैसे आपने वो, आप ये भी बोल सकते हो, आपने आईटीटी वाला एग्जांपल दिया बट मैंने इस पे आपको ग्रिल कर लिया, मैंने कहा ये तो मैंडेटरी है तो सबको करना पड़ता है। तो आप ये बोल सकते थे कि दैट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी वेयर आई गॉट टू मीट न्यू पीपल, सो आई मूव्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड ट्राइड टू मेक एफर्ट्स टू टॉक टू एवरीबडी देयर। दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू आर डूइंग। अटेंड करने को एवरीबडी इज अटेंडिंग इट, बट व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा? यू मेड एफर्ट्स टू टॉक टू एवरीबडी, इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, बिल्ड अ रैपो विद देम, करेक्ट। तो वो बस आपको दिखाना है कि मैंने एक्स्ट्रा करा एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अदर देन दैट आप बोल सकते हैं आई हैव स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू माय लाइक सिस्टर और फ्रेंड्स एंड मोर, और कुछ भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड करो। अगर कोई पब्लिक फोरम ज्वाइन कर रखा है तो उसके बारे में मेंशन कर दो, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट, व्हाई शुड वी चूज यू? appropriate nahi laga, very precise answer, I have all the skills, basically that was the crux of your answer. I have all the skills, everybody has skills, okay, how can you make yourself different? आप बोल सकते हो, see that will be your personalized answer, I can only give suggestions that क्या क्या लोग ऐड करते हैं, ठीक है। So definitely this is true that a lot of people have applied for this position, and आप बोल सकते हो the amount of confidence that I carry, that I'll be able to do the job, the way I will present myself in front of the clients, I think that I will make sure that I will give my 100%. I have बस अपने बेनिफिट गिनाने हैं, फायदे। मेरे को ऑडिट में असाइनमेंट पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लेट नाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे को कितना भी काम दो, मेरे को 24/7 काम दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्हें दिखेगा ना यार ये यूटिलिटी में ड्राइव कर सकता हूँ रवि से, अपने आप वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे आपके आंसर से। यू हैव टू जस्ट अपने फायदे गिनाने हैं कि यार कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, काम करने में प्रॉब्लम आएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम, सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वर्क, मेरे को सर 24/7 काम करने का है, ठीक है। ऐसे से जस्ट शो इट विद योर एनर्जी, बी वेरी एंथुसियास्टिक व्हेन यू आर स्पेशली आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई दे शुड चूज यू, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जो लोग एनर्जी के साथ काम करते हैं उनका कोई मतलब मैच ही नहीं कर सकता उनका लेवल। The kind of energy that somebody with somebody highly energetic brings to the team, that is definitely an amazing experience. So वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं that I have the right knowledge that is appropriate for this particular profile. At the same time, I'm very passionate about my work. I want to work day in and day night. I'm so passionate about learning new things, and I will be giving my more than 100% to this job. I don't have any problem with outstation assignments. I would love to travel to different cities. I don't have any problem working late night shifts. I'm ready to give my 100% to that. ये सारी चीजें ऐड करनी है आपको, ठीक है। आई होप बाकी सबको भी थोड़ा समझ आया कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो, राइट। तो नील और लिख लिए हैं पॉइंट्स पूरे, है ना कि अब ये वाला आंसर में ये ऐड करूंगा मैं। तो कुछ और हाँ, एक चीज और, रवि, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी?
इंटरनेट पे सर्च कर लेना, दीज आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क फ्रॉम इंटरव्यूअर। इंटरव्यू मास्टर क्लास में भी लिस्ट मिल जाएगा, that these are the list of questions that you can ask from the interviewer. ठीक है, तो just go through it, उसको पढ़ के जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं कि what will be the career trajectory in this particular profile, कैसे जो आगे होता है, क्या लर्निंग आउटकम होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और भी पूछ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिस भी कंपनी बेकर टिली ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ और पूछो कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान्स हैं, यूजुअली यही सब नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, राइट। अच्छा लगा आपको इंटरव्यू या देके, मैम, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार कल अब अच्छा। यस मैम, सो हाँ I will prepared well from this interview. हाँ, और कॉन्फिडेंस रखो, कोई बात नहीं है। कहीं अगर लग रहा है कि अटक रहे हो इंग्लिश में, हिंदी बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है, वंस यू आर सिलेक्टेड नोबडी स्पीक्स इन, मतलब बिग फोर में भी कोई पूरा टाइम इंग्लिश में नहीं बात करता है। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई हैव फ्रेंड्स वर्किंग देयर, मेरे को पता है इसलिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं, बट ये है कि पूरा भी हिंदी में मत बात करना, लेकिन जहां अटक रहे हो वहां हिंदी बोल देने का। ये मत करना कि यार मेरे को इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा ही नहीं। बोलना जरूर अपना आंसर विद फुल कॉन्फिडेंस। नोबडी, कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। Thank you. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से देना आंसर्स, और थोड़ा सा ब्रश अप कर लो, प्रिपेयर कर लो, एंड प्रिपेयर इट विद फुल कॉन्फिडेंस, ओके। Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। लेट्स मूव टू मिहिर। मिहिर, आर यू रेडी? ओके, I have Yes, unmuted ma'am. you. Mihir will Yes, ma'am. be taking your interview in just like 2 minutes. I have a few questions in the chat. Ma'am, what questions are asked in Big Four? ये जो questions मैंने पूछे हैं, there is no criteria कि Big Four mid size, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं मुस्कान, so you can prepare for all these questions. Tell me something about yourself and strength or weakness. I think I've already covered this portion. Muskan, I think आपको answer मिल गया होगा, so I'm not going to expand more on that. If interviewer asks whether you will apply in other firms, that we should say, I think they are just putting you in a spot because everybody knows सब लोगों ने apply कर ही रखा है, तो आप बोल सकते हो, be very straightforward that yes, I have applied in other firms as well. बस सिंपल, कोई ज्यादा आपसे पिन पॉइंट मतलब नेट पिकिंग नहीं करने वाले हैं। अच्छा बताओ कौन सी फर्म में, नहीं पूछने वाले हैं, दे रियली डोंट केयर, ठीक है। उनको कोई मसाला नहीं चाहिए आपकी लाइफ का कि अच्छा कहाँ कहाँ अप्लाई करा हुआ है, कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। टाइमिंग फॉर द जॉब, नो नीड टू आस्क इट, डू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन, ठीक है। सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर वो पूछते हैं आपसे तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, एंड आप उनमें ये लाइन जरूर ऐड करना कि मेरा अभी लर्निंग फेज है। इंटर्नशिप के लिए अगर आप अप्लाई करो, आर्टिकलशिप के लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अलग आंसर होता है इसका, इस क्वेश्चन का, बट अगर आप स्पेसिफिकली आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट टेल देम इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी होगा। प्लस मेरे लिए अभी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस स्टेज इन माय करियर, सो आई विल बी गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द एक्सपोजर, टू द एक्सपीरियंस, rather than salary, rather than stipend that I will get, ठीक है। Can we ask about whether the timing are flexible or not? आई थिंक ये सब क्वेश्चंस आपको एचआर से पूछने चाहिए, इंटरव्यूअर से नहीं पूछने चाहिए। एचआर से जब आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन पे हो, आप तब पूछिए। जो आपका फॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है, दीज आर नॉट द क्वेश्चन आई थिंक यू शुड बी आस्किंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं पूछना चाहिए। खुशी, व्हाट कैन आई प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट राउंड देखो, यूजुअली मैंने क्या है, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एचआर एंड टेक्निकल ले लेती हूँ। आजकल यूजुअली हो क्या रहा है, आपका टेलीफोनिक जो है, जो एचआर राउंड है वो टेलीफोन पे हो जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्यों सीए करना चाहते हो। सो 10 to 15 मिनट्स का कॉल रहेगा, उसमें आपको सारा पता कर लिया जाएगा। और जो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, दैट इज मोर टेक्निकल। ऑब्वियसली दे स्टार्ट ऑफ ऑन अ इनफॉर्मल नोट, जो एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेल मी समथिंग व्हाट इज नॉट देयर इन योर रेज्यूमे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, you know, brief me about your resume in 5 minutes. ये 3 टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत होती है, एंड आफ्टर दैट दे जंप राइट इनटू द टेक्निकल, एंड टेक्निकल चलता है कम से कम, लाइक अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आधे घंटे का टेक्निकल जाएगा आराम से, ठीक है। what type of questions can we ask when they say do you have any questions? I just told you, Khushi, that these are the list of questions that you can ask. आप पूछ सकते हो कि ये मेरा जो करियर ग्रोथ है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में किस तरीके से होगा, इंटरनल ऑडिट में कैसे जो है करियर ग्रोथ होगा, या फिर मेरे को इस प्रोफाइल से व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। आप ये सब क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं।
Can we ask if they will allow for transfer or not? Radhika, I will recommend not to ask this question during a formal interview. और अगर आप बिग फोर में ऑनेस्टली अप्लाई कर रहे हो, राइट, दे रियली डोंट केयर, आप कभी भी छोड़ के जाओ, उनके पास बहुत लोग हैं यार आने के लिए, ठीक है. बट अगर आप किसी मिड साइज फर्म में ज्वाइन कर रहे हो, आई थिंक यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम द डायरेक्टर, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, डायरेक्टर पार्टनर, उनसे नहीं, जो HR है, जो आपका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हो. डोंट आस्क इन द फेस टू फेस इंटरव्यू डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्टर और पार्टनर, दैट डजंट लुक गुड, ठीक है. गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट, उनका टाइम को रिस्पेक्ट करो. डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस फ्रॉम देम, ठीक है. आपका क्वेश्चन सिली नहीं है, बट आई थिंक यू शुड आस्क इट फ्रॉम द जूनियर लेवल जो है वहां पे, HR से पूछ सकते हैं आप. Is covering letter necessary along with resume? 100% कशिश, 100%. आप मेल भेज रहे हैं, अपना रेज्यूमे मेल कर रहे हैं किसी को, ईमेल में आपका रेज्यूमे के साथ कवर लेटर जरूर होना चाहिए, ठीक है. यूजुअली क्या होता है, मेल की बॉडी में एक कवर लेटर होता है और अलग से भी PDF डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है. तो ईमेल फिर छोटा रखना और कवर लेटर में सारी डिटेल ऐड कर देना, या फिर कवर जो पूरा है अपना ईमेल को ही प्रॉपर बना देना कवर लेटर के फॉर्म में, जस्ट ऐड रेज्यूमे देयर. ईदर टू ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू कैन डू ईदर, ठीक है. So with this we come to the end of this Q&A session. They have asked why we Sham will get back to your question. Sham from YouTube will get back to your question, and Mihir, let's start with your interview. Yes, ma'am. So कौन सी फॉर्म में जाना चाहोगे मिहिर? Ma'am, firm is not very specific to me, but I have a specific domain for me. Like I have my interest in finance, so I am looking for my articleship in the finance field. Okay, that's a very tough nut to crack. Okay, मतलब फाइनेंस में आर्टिकलशिप बहुत ही रेयरली मिलता है. Okay, but when you do mention finance, what do you think it's going to be? M&A से related और क्या मतलब किस particular profile में जाना चाहते हो? Ma'am, something about something related to investment banking and all. Okay. नहीं आप see, I appreciate you're being honest, but बहुत ही rare chances हैं कि investment banking में articleship मिलेगा, बहुत rare chances हैं. And I believe top firms में तो नहीं ही मिलने वाला. So try out, you know, जो boutique firms होती हैं, शायद वहाँ पे कुछ exposure मिले आपको, ठीक है. So research a little bit more about it, then you'll be properly able to pinpoint कि हाँ मुझे इन firms में apply करना चाहिए जहाँ पे actually में investment banking में articleship होगा. But if not, then like start applying for other profile. Like start audit is very common, internal audit is there. And because a student of mine is working in internal audit, risk and advisory में, ठीक है, and he also wants to get into investment banking. So what he's doing is वो side by side stock market से related या courses कर लेते हैं while his articleship is going on, right? And then after that he will be like, you know, taking up some course and everything, and then that's how you're like you pivot into investment banking. So articleship level pe I will say that it's, I just don't want to kill your hopes, but I also want you to show the reality that it will be very very tough. So be very prepared कि हाँ मेरे को शायद start audit से भी अपने career की शुरुआत करनी पड़ सकती है, and later on I will switch to investment banking. So have that thought in your mind, ताकि एकदम से ऐसे शॉक नहीं लगे कि यार मैंने तो सोचा था मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करना है, मेरे को करने को नहीं मिला. Okay. Right? Yeah. I'll keep that in mind. Yeah. So let's start with your introduction. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Mihir Vijayvargiya. Currently, I am a CA intermediate student, having cleared my Group 1 in the recent attempt and preparing for my Group 2 in the next November 22 attempt. And with clearing my Group 1 in CA Inter, I have also cleared my second year in BCom examinations. And before that, I have done my schooling from a local city level school only here in Bhopal. So that is all about my educational qualifications. Also with a CA intermediate student, I am also a CS executive student with that. So that is all about my professional qualifications and educational qualifications. Other than that, I live in a joint family and I have around 10 family members with me. Personally, I am the only child of my parents, but I live in a very big family, so I don't have I don't feel any like if I say that I have many cousins, so I don't
feel that I don't have any siblings. The cousins I have are like my siblings only. So that is all. Okay. Do you have any hobbies? I do have some of the hobbies, ma'am. I do like to read some biographies of the freedom fighters and the great people from our country, and so also the finance books, personal finance books. And I do like to play basketball in my free time. Also, to add one thing, I consider myself to be a good actor, but uh, uh, with CA, I'm not able to actually practice it that well. Have you done theater? I had done one act. Okay, one act. Okay. All right. So what was the last book that you read about any freedom fighter? Ma'am, currently I am reading Mahatma Gandhi's biography, the My Experiments with Truth. Okay. What have you learned so far? And what I have learned is that, first of all, be very honest with your work. Let it be any work, let that be anything. But if you are into that, be honest to that. And if you can't be honest to that work, just leave that work and change your profile or change your work, or just be honest. That is the first thing which Mahatma Gandhi has made me learn. Hmm. Do you consider him as your idol? I do. Okay. So why did you choose CA, Mihir? Ma'am, I don't know if you will take this answer very well, but everyone around me was just doing BCom honors or BBA, or some people were maybe just doing mass com and some other courses. But I wanted to do something which is like a little tough in the starting, but that could give me a better stage to present myself. I was I had some counseling session from my cousins, from my relatives. Everyone told me not to do CA because it is not my cup of tea. I'm not a very if I tell you honestly, I'm not a very good academic student. I am I almost I have failed in my 10th standard also. So everyone told me not to pursue CA but to pursue BCom from a good college, from a good college. But this only gave me some hope and interest towards this course, and hence I chose it. After choosing it, I am currently loving it more than I expected to be. Okay, awesome. So Mihir, you have applied for stat audit, right? Why don't you go for internal audit? Why do you want to work in stat audit? Ma'am, what I think is in internal audit, you get to see only a one firm, how the one firm is working from the start to the end. But in stat audit, I will be able to see how the different companies, how different organizations having different businesses, having different business plans and different business domains work. And I will be able to see more in my articleship journey. Okay. So are you familiar with any technical tools like MS Excel, PowerPoint, Power BI? I have done my ITT training, mandatory ITT training, but if I tell you honestly, I am not very skilled in or any of the any of the technical softwares. Do you know basic Excel? I do know basic Excel. Okay. I do know some formulas, but yeah. No problem, no problem. So, what is your goal 5 years down the line? Where do you see yourself 5 years down the line? Ma'am, I expect to have my own CA firm, have my own office, and be able to have a base of clients on whom I can uh, have my livelihood on. Okay. Okay. So that means since you're very clear that you want to start your own practice, so why do you think you are the right fit for this profile? Because we'll be putting in so much efforts in training you. We'll be training you for 3 long years. We'll be giving you all the exposure and experience, and only to see you that you will leave the organization.
When I know it is certain, why do you think I should hire you? Ma'am, what I think of this question is that there are, if I am taking this question as from a point of view of a big four, ma'am, you might be having thousands of articles, but you might not be having that much amount of employees under you. So the number of articles are definitely more than the number of employees which you will be having, which you are currently having, and which you will be having at any point of your any point of time. So, ma'am, what I think is that not every article which you are having, or which you would have to, which you would have, which you would want to become your employee, will they will not definitely join your company or join your firm as an employee. They can definitely, even if they want to pursue a job after completing their articleship, they can still leave your organization after gaining so much knowledge from you. So that is what I think. And here I have come to contribute as an article for 3 long years, and I will try to do that honestly throughout my articleship journey. Okay. Do you have any weaknesses? I do have, ma'am. If I don't like any work, I am just like I just can't do that work. That is my biggest problem. So that is my biggest weakness, as I can tell you. Yeah. And what are your strengths? Strengths, I would say, like, just opposite of this. Just as I have told you that I love finance, I love numbers, and if I get some work in finance, and if I get the work I want to do, I like it, and I will do it with my full passion and my full hard work. Like, working hours or office hours won't matter to me. I will put in my own efforts in doing that work. Sounds good. Why did you choose commerce back in 11th? You had the option of choosing science, right? So why commerce? Yes, ma'am. Actually, if I tell you, as I have already told you that I failed in my 10th standard, so science was actually not a very good option for me, or very intimidating option for me. So I liked accountancy, as I come from a family. I come from a business family, so I have seen accountancy and everything around me going here and there, and so, and also I have some relatives who are also a CA, and I discussed with them, and I thought that commerce would be the right fit for me, as I have my interest for accountancy, economics, and maths was one of the things. So I thought that CA and commerce are the right fit for me. Were the right fit for me. Okay. You mentioned that if there is any work that you don't like, you can't do that job, right? And in your articleship, you will be given a wide array of work. And obviously, there will be some work that you won't like. There will be some work which you'll absolutely love to do. But, when it comes to collective efforts as a team, you do have to do some work that you don't like, but you still have to do. How will you do justice to the team as a whole? Because, everybody will have expectations from you, and you have to contribute as a team member. How will you justify, your role as a team member if you're not able to do things that you don't like at all? Just like you have asked a question to me that what are my weaknesses, you did not ask me what are my efforts to which I am putting to mitigate that weakness. I am actually trying to mitigate my weakness through doing the work which I do not like. Like, if I tell you honestly, I like practical subjects more than the theory subjects. But what I am trying to do is that I am trying to study. I am trying to what I should say, like, expertise in my theoretical subjects more than my practical subjects, just because to have that patience in me, so that I can do the work which I don't even like that much, so that as a team player I can contribute to my team, and I can prove my expectations which the team is expecting from me. So that I think is my answer. Yeah. Okay.
So you have been a brand ambassador at Tute.com. yeah. So tell me, how was your experience there, and what were your roles and responsibilities there? Yes, ma'am. So as you have told already, as you know already, I was a brand ambassador intern at Tute.com. So my job was first of all to just in simple words, I had to sell the courses which the website offered, and I had to tell people about the different types of courses and the different types of internship which they can get after completing these courses. So that was my work. At start, I thought that this is just a sales executive and everything like that, sales executive work. But after talking with people, after get interacting with the colleges and the people around me, at my coaching, where I have done my intermediate and foundation coaching from physical coaching at Bhopal only. Also my college, 2 3 more colleges which I went to, and they gave me the opportunity to talk to the students. I really loved the opportunity. It was a paid internship although, but I did not get paid that much, but I really loved the opportunity to getting to talk to people and try to convince them. And it really helped me in for my sales skill and for my convincing skills and my communication skills. Okay. Did you like the work there? I definitely did like the work. Okay. You've mentioned that you have organized mock parliaments for underprivileged children across the country with Parakaram Yuva Sansad, right? Answer, yeah. What exactly did you do that time, and how did you manage to pull off that assignment? Ma'am, I was part of the HRD committee. So my work was to convince colleges and schools to make their students to come and participate in these events. Also my work was to communicate to the individual students as well, and to motivate them and to come and participate in the mock test to actually learn about how the legislature work in our country. Okay. Fair enough. Thanks for joining in. Do you have any questions for me? I do have one question, ma'am. Like, if and when I get selected at your firm, what are the things which I should be keeping in my mind? So, well, I cannot, answer that in a couple of minutes, because there will be so many things that you will obviously need to take care of. But one thing is for sure, that come with an open mind, right? You will have immense learning experience here if you get selected, right? And always be looking out for opportunities. With the current roles and responsibilities that will be handed to you, you will get opportunity to explore more projects. That obviously depends on your caliber and how much enthusiastic you are to take up new assignments. That'll be definitely challenging, but come with an open mind, and be absolutely passionate about learning, because that's what is more important at this stage in your career. So yeah, that's about it. And obviously there will be a lot of technical stuff that you will learn throughout these 3 years. So make sure that you're always updating yourself with the technical stuff. So whatever amendments are coming, keep yourself updated with all of that. So yeah, that's about it. Okay. Thank you so much, ma'am. It was lovely interacting with you. Thank you so much. बहुत बढ़िया. So everybody, please give feedback to me here. I really loved this conversation. मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं आप और मैं बात ही कर रहे हैं. मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ. So that's the kind of smoothness, people who are comfortable talking, they give when they are giving the interview. And this is the same amount of confidence I believe you're going to carry in your actual final interview. So kudos for that. Great confidence, great clarity of thoughts. Just that, if I were to give you this overview of the entire interview, I believe you're too honest, man. I do not recommend it. Okay. I do Okay. not. You're just Okay. honest beyond expectation. A couple of questions that I did not expect the kind of answer you gave. जैसे वो failed in 10th standard. Okay, see, these are things that people don't mention it. Okay. Personally, if you were to ask me how did I like you as a candidate,
I absolutely love the way you communicated. I absolutely appreciate the honesty that you brought to the interview. But at the same time, I'm thinking from the point of view of the HR, right? That much of honesty is matlab zarurat nahi hai, because she's not a personal connect, right? This amount of honesty works in personal relationships, but not in work environment. You have to be diplomatic. You have to have a different formal face in front of the interviewer and a different personal face with your loved ones, right? So अगर until and unless मतलब सामने से कुछ ऐसा event है जो आपको बताना ही पड़ेगा, connect करना ही पड़ेगा, then definitely you can mention about that. If that is not needed, then it's fine. Like, don't necessarily samne se bring it that, and I failed in 10th and that's how. So if something inspiring came out of it, if there is one lesson, one life lesson that you learned out of that experience that you want to share, maybe then. Otherwise, I would say that, you can skip that. Not because, failing in 10th is, such a big stigma and they'll consider it. No, I mean, I don't think there is any, importance at that point, because I really think that you're going to do academically very fine, and you seem to be very, like a welcoming person. At the same time, you seem to know your stuff also. So I think just was unnecessary. मतलब अगर जरूरत नहीं है तो मत लेकर आना, ठीक है? Okay, ma'am. Then again, where do you see yourself 5 years down the line? Have my own CA firm. Malab, keep it as your personal goal, right? Don't mention it in front of the HR. Just mention that you see yourself working in a great organization, contributing it, having years of experience to your credit, at the same time contributing immense value to the organization, right? And reaching the pinnacle of your career, having bringing in new clients, working at a managerial or a CXO level, something like that. Something of that sort you mentioned. मतलब अब आप बोलोगे कि मैम तो झूठ हो गया, मैं तो ये करना ही Exactly, ma'am. I know, but मतलब see, when you're giving the interview, your goal is to get the job, right? Okay. Your goal is not to like impress them. वो आप अपने काम से कर दोगे impress, like the person you are, you will impress them when you will join the firm, when you will join the team. But मैं specifically अगर interview की बात करूं तो एक टेम्पलेट है जो शायद कैंडिडेट्स का सेलेक्ट होता है कि हाँ यार ठीक है, ये सही है. सो मैं सिर्फ आपको उसी हिसाब से अपना आंसर मोल्ड करने की कोशिश करवा रही हूँ, ठीक है? एंड ऐसा तो है नहीं कि राइट आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीए यू विल बी स्टार्टिंग योर फर्म. You will gain some practical exposure, right? I have my planning as I will start my CA firm as soon as I clear my. Well, I personally do not recommend it. If you would ask me, although you didn't ask for any advice, but I'm just telling you. Please, ma'am. The reason being क्या होता है कि ना अभी आपका आर्टिकलशिप कहीं से भी हो, ठीक है, आपको तो वैसे भी बड़ी ही अलग सी प्रोफाइल में करना है. देन हैविंग ए सीए फर्म, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से सीए फर्म तो बड़ा ही मतलब अलग सा ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो टॉप फर्म्स ही ऑफर कर रही हैं, आप समझ रहे हो? मतलब जो एकदम एक तो कंसल्टिंग वाला पूरा ग्रुप है एमबीबी का, उसके अलावा देयर आर लाइक अदर फर्म्स दैट आर ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो एक तरफ तो आप एकदम टॉप लेवल कॉर्पोरेट का बात कर रहे हो कि मुझे फाइनेंस में जाना है, और एक तरफ आप बिल्कुल ही मतलब एंटरप्रेन्योरियल साइड आ जाते हो कि मुझे अपना फर्म खोलना है. सो मुझे वो थॉट्स में शायद थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगा, ठीक है? मे बी और मैं इसलिए मना कर रही हूँ आपको राइट आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीए फर्म नहीं स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज उस टाइम ना मतलब जिस लेवल का लर्निंग मतलब आपको क्वालिफाई होने के बाद मिलेगा कि क्लाइंट्स एक्चुअली में इंटरमीडिएट लेवल पे दोस्त लेवल का काम होता है कि भाई ये रिटर्न फाइल कर दे. यू वोंट बी एबल टू बैक बिग असाइनमेंट्स एट दैट टाइम until unless you gain like good कि आप अपनी आर्टिकलशिप के साथ भी थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स करते रहो, then तो you still stand a chance कि ठीक है आपका क्वालिफाई होने के बाद people will have more trust on you, they'll give you assignments, right? But right after qualifying CA there is so much more to explore. 3 साल में मतलब निचोड़ नहीं पाओगे आप इस CA कोर्स का जो है, क्योंकि अगर आप अपनी फर्म स्टार्ट करो you would obviously want to give best services from day one, right? Yes, ma'am. So the level of your work, the quality of your work will also improve if you gain some exposure and then start your firm. मतलब personally मेरा suggestion ये होगा, बाकी it's your life, totally your call. मतलब मेरे को नहीं पता आपका क्या background है, किस तरीके से आपका thought process है. So definitely I am first CA in my family, so I will be the first CA in my family. So yeah, so I think अभी आप जैसे थोड़े से new हो, थोड़ा सा और gain more knowledge about the profession, because अभी क्या है first thought पे कि हाँ यार अपना काम करना है, everybody wants to like, but I think the quality of your service will improve if you have
बेस्ट प्रैक्टिसेस इन योर ऑफिस। तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ से सीखोगे? खुद से नहीं बनती हैं। अगर आप खुद से बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करने जाओगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको वहां लगेगा, तब जाके आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। बट by working in top companies, you'll be able to learn those best practices and you will be able to implement those best practices right from day one when you start your practice. So इसलिए मतलब हमसे भी जैसे डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि पहले आप थोड़ा सा एक्सपोजर ले लीजिए, बिग 4 में काम करिए, टॉप फर्म्स में काम करिए, एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखे वहां पे, एंड देन इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दैट इन योर फर्म, राइट? Quality of your services will definitely improve if you have exposure to your credit and then you start. Right, so that's about it. Then that question, why we should hire you? वो आपने बोला कि भाई आप जो है सारे लोग आपको छोड़ के ही जाने वाले हैं, पता है को हर कोई ज्वाइन नहीं करने वाला। So did you realize while answering that कि यार ये क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो गया है? Yes. जो वो थोड़ा सा फेस पे एविडेंट हो गया था। क्या है कि हमें पता है यार कि नहीं ज्वाइन करते, बट वी डोंट हैव टू से इट आउट लाउड, ठीक है? तो आपको बस वहां पे ये बोल देना चाहिए था कि सी आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माय ओन फर्म, राइट? आपने जैसे लिखा कि भाई मेरा फ्यूचर में गोल है 5 years, तो एक तो वो जब क्वेश्चन हट जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? लाइक पहले ये क्वेश्चन टफ हो गया क्योंकि आपने कुछ और बोला था, ये क्वेश्चन आया ही इसीलिए। तो अगर वहां पे वो रूल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर यू विल बी एबल टू आंसर अ बेटर, यू विल बी एबल टू गिव अ बेटर आंसर हियर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए, जो मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन करे अपने फायदे गिनवाने हैं, ठीक है? विदाउट बैशिंग एनीथिंग एल्स। मैंने कभी से क्वेश्चन पूछा स्टार्ट ऑडिट इंटरनल ऑडिट का बताओ, आपने भी वही गलती करा कि स्टार्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में मुझे ये सीखने को नहीं मिलेगा, मुझे स्टार्ट ऑडिट में ये सीखने को मिलेगा। नहीं, आप मुझे ये मत बताओ कि आपको दूसरे प्रोफेशन में क्या सीखने को नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली यू आर बैशिंग दैट प्रोफेशन एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड। मतलब अगर आपने को ऊपर चढ़ना है तो किसी के सर पे पैर रख के नहीं करने का, ठीक है? तो अगर मैंने पूछा कॉमर्स क्यों लिया, साइंस बेकार है, ये नहीं बोलने का। मुझे कॉमर्स ज्यादा पसंद है, साइंस का मुझे आइडिया नहीं है, मेरे से कॉमर्स का पूछो, मुझे कॉमर्स ज्यादा पसंद है। लाइकवाइज इंटरनल ऑडिट अपने आप में बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्टार्ट ऑडिट में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि कुछ भी मत बोलो कि वहां पे लिमिटेड है, ये है, जस्ट से दैट कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वन गेट्स इन स्टार्ट ऑडिट, द काइंड ऑफ the way we understand the business, the way we look at assertions and the way we assess the entire business, its profitability, and the way we take care of compliances, it absolutely amazes me, and I want to be a part of one of such assignments, in fact multiple of such assignments, and want to take exposure in different industries. So that's why start audit is my first choice. That's why I want to start my articleship in this field. ठीक है, इस तरीके, ठीक है? Then हाँ, जैसे आपने बोला कि आप क्या करते हो, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो पहले आप उस क्वेश्चन को रिपीट करते हो कि अच्छा आपने मेरे से ये पूछा था। सो राइट अवे स्टार्ट विद योर आंसर, डोंट बिल्ड लाइक कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने बोला कि आपने मेरे से ये पूछा ही नहीं कि मैं अपनी वीकनेस कैसे ओवरकम कर रहा हूँ, ये आपने बोला था, इफ यू रिमेम्बर। यस मैम। हाँ, तो वो मत बोलो। तो आप, जब मैंने आपसे आपका वीकनेस पूछा ना, तो ऑटोमेटिकली खुद सामने से ही बता दो कि यार ये मेरा वीकनेस है, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट दिस वे। डोंट वेट फॉर मी टू आस्क कि आप ओवरकम कैसे कर रहे हो। व्हाई वुड आई केयर? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर वीकनेस। मैं आपकी वीकनेस से ये असेस करना चाहती हूँ कि ये कहाँ पर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन एंड कहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मैं वो देखना चाहती हूँ, ठीक है? और उससे मुझे पता चलेगा, जैसे आपने बोला यार मैं वो काम करूंगा ही। मेरा स्टेट अवे क्वेश्चन क्या आया, मैंने कहा टीम में तो सबको सब काम करना पड़ता है, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे फिर? मतलब फंसा लिया ना आपने अपने आप को, पैर पे कुल्हाड़ी मार दी खुद से। तो आंसर आपके वर्ड सिर्फ डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आई डोंट लाइक टू डू, ठीक है? एंड हाउ एम आई रिकवरिंग दिस, हाउ एम आई ट्राइंग टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? I give myself small targets. ठीक है? I don't give big enough targets. I believe in starting small. Piece by piece, I will fully overcome this weakness of mine. So I give myself small targets. So for example,
theory subjects is my weakness. So what I've tried to do is I have tried to make sure that I am going to study theory subject at least 1 hour a day and then write practice it while writing. मैंने क्या करा, आपका ही आंसर मैंने बोला, सिर्फ मैंने उसको बेटर फ्रेम कर दिया. Yes, ma'am. This sounds like a better answer. That's it. आंसर में कोई कमी नहीं है, just frame it better, right? Okay. Love finance, strength was fine. Commerce is right fit for me. Again, आपने थोड़ा वो वाला एंगल डाल दिया था 10th वाला, so try to avoid that. Okay. बाकी एक्सपीरियंस और दोनों एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छा बोला वहाँ पे. जो दोनों एक्सपीरियंस मैंने आपसे पूछे थे, आपका वो सांसद वाला भी और आपका ट्यूट वाला भी, तो तब मुश्किल नाम है. कौन स्टार्टअप है भाई? इतना मुश्किल नाम रखा हुआ है. हमारे जो सिंपल रखो, थिंकिंग ब्रिज. But they are good set of people, as far as I know. They're good Yes, set ma'am. of people, but the name is so tough to pronounce. So that's what I'm Yes, saying. ma'am. They must be doing a wonderful job. I'm not saying that. Yeah. So that's about it. I hope you loved this experience and कुछ सीखने को मिला होगा शायद आपको. Definitely, ma'am. Improve your answers and I hope to see you in the coming session. अरे नवनीश भाई पूरी खांसी सुना दी. एक सेकंड रुकिए. Yeah, so I hope to see you soon. मतलब जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, so let me see कि क्या इम्प्रूवमेंट है, और खुद भी रियलाइज करना कि हाँ यार मैंने फर्स्ट इंटरव्यू कैसा दिया था और मेरा upcoming mock interview कैसा होगा. So you'll get to see the difference. So try to reframe your answers first of all, practice it, and अभी तो obviously prepare for your CA intermediate. पहले सबसे पहले priority वो है, उसको clear करो. Okay. Yes, ma'am. So that's about it. Thank you so much for joining in. And with this, we are going to end today's session. I believe abhi late ho gaya hai, Navneesh. So we'll be doing your interview in the coming live session. ठीक है? And किसी को कुछ भी question पूछना है, please go ahead shoot in the chat box. And let me see where is the live chat going on. Ravi Bhai OP. Ravi Bhai ka interview khatam. Okay. How can we get a mock interview session with you like this? मुस्कान, वी डू सेशंस एवरी वीकेंड. अभी कभी कभार बीच बीच में मिस हो जाता है, तो मुझे पता है बच्चे नाराज हो जाते हैं, हमारे जो लर्नर्स नाराज हो जाते हैं, बट वी कीप डूइंग दीज लाइव सेशंस ऑन वीकेंड्स, स्पेशली सैटरडे 6 PM, so you can join in any time in the future as well. So that's about it. Ma'am, can we speak in Hindi a bit while giving interview for the position? See, I will say that you should avoid it, but अगर कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे इंग्लिश में बोलना कैसे, it's fine, you can speak हिंदी. कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. Like I'm saying, एक बार ज्वाइन होने के बाद nobody really give, आपका मेल, फॉर्मल मेल में इंग्लिश चलेगा, वहां पर आप हिंदी नहीं लिख सकते, भाई डॉक्यूमेंट भेज दे. ठीक है, वहां पर वही बोलना होगा, डियर सर प्लीज शेयर द डॉक्यूमेंटेशन रिगार्ड्स केशव, ऐसे करके. बट हिंदी में चलेगा वहां पे कम्युनिकेशन, आपका जो रेगुलर कम्युनिकेशन होगा. करेक्ट. मैम, विल द इंटरव्यूअर विल आल्सो बी ए सीए? मोस्ट लाइकली यस. आपका जो इंटरव्यू है पहले एचआर होता है, फिर डायरेक्टर एसोसिएट के साथ होगा. ठीक है, या फिर आपके एसोसिएट के साथ होगा, डायरेक्टर के साथ होगा, या एंड देन नेक्स्ट में जो है पार्टनर के साथ होगा. सो डायरेक्टर इज मोर ऑफन देन नॉट ही इज अ सीए. ठीक है, मोर ऑफन देन नॉट. सो नवनीश मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट वन इंटरव्यूअर आस्क. ओके, गो अहेड, टाइप कर दो एक बार चैट में. नवनीश, अपना क्वेश्चन अगर आप चैट में टाइप कर दोगे तो, या फिर मैं आपको अनम्यूट करूं. Ma'am, the ones giving interview can watch the first lecture of masterclass. They will get an idea of the domain like internal audit and consulting work. Yeah, absolutely. Great suggestion, Keshav. तो हमारे थिंकिंग ब्रिज पे हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला है, या फिर आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम भी होगा, उसमें आपका एक कोर्स ऐड हुआ होगा, लाइफ करियर एंड गाइडेंस वाला. वो ऑटोमेटिकली आपके कोर्स में होगा. तो माय कोर्सेज में जाएंगे आप, उस कोर्स में जाना, और वहां पर आपको टेक्निकल सेशंस फ्री मिल जाएंगे. सो द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवरी मास्टर क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री. आपको डोमेन क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार इस डोमेन में इस तरीके का काम होता है. सो मिहिर, यू टू कैन वॉच दोज लेक्चर्स. एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर आप देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि यार इस वाले डोमेन में ये सारा काम होता है. सो ग्रेट सजेशन केशव. व्हाई नॉट चूज बिग 4? रवि का भाई क्वेश्चन है कि अगर मैं बेकर टिली में जा रहा हूँ, टॉप 10 में आता है, तो वो बिग 4 पूछ रहे हैं, तो बिग 4 क्यों नहीं ज्वाइन करना है? तो जो है आप उनको जो है ये आंसर बोल सकते हो. See, I went through the profile of Baker Tilly and I got to know the amazing team that is there, जो मुझे support मिलेगा. And आप बोल सकते हो I got to know the work culture and everything. It's so amazing to work with inspiring people. And I believe by contributing like enough efforts, one day Baker Tilly too can become one of the big fours in the future. तो थोड़ा सा एक मतलब inspiring answer आप दे सकते हो. ठीक है?
Okay, Navneesh, I'm unmuting you, so you can ask your doubt here. Yeah, Navneesh. हेलो Yes, मैम। Navneesh. Hi. मैम कल मेरा डिलॉयट में इंटरव्यू था, तो वो 12 मिनट तक इंटरव्यू चला, बट उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हुई मेरी तरफ से, तो इंटरव्यू रुक गया। तो मैंने एचआर से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने रीस्केड्यूल किया है। तो अभी वही इंटरव्यूअर होंगे जो वापस लेंगे, तो उनसे किस तरह स्टार्टिंग में कहूँ? सबसे पहले अपोलोजाइज करना कि मेरे लास्ट में नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया था, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद नॉर्मल तरीके से ही कंटिन्यू होगा, ऐसा वो नहीं है लाइक इट स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, ठीक है। यूजुअली तो ऐसे रीस्केड्यूल नहीं करते हैं, बट आई थिंक शी वाज काइंड इनफ, द लेडी वाज काइंड इनफ टू रीस्केड्यूल इट। एंड प्लीज मेक श्योर नवनीश नेक्स्ट सेशन में मतलब दे वोंट लिसन टू यू, अगर नेक्स्ट सेशन में फिर से नेटवर्क कनेक्टिविटी हुआ दे वोंट लिसन टू यू। सो प्लीज मेक श्योर अपना साइबर कैफे चले जाओ, कहीं चले जाओ, बट मतलब सेकंड टाइम अपने अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी। अपना पहले से ही अच्छे से जुगाड़ बना के चलोगी भाई, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी शुड नॉट बी, आपका आंसर पसंद नहीं आया, आपने अच्छे से बोला नहीं, वो ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी शुड नॉट बी द रीजन फॉर देम टू रीस्केड्यूल इट, राइट? ठीक है, तो प्लीज उसको ध्यान रखें नेक्स्ट टाइम। केशव हैज अ फ्यू डाउट्स। केशव, नवनीश, इसके अलावा और कोई डाउट है? नो मैम। अब कोई बात नहीं, सुनो, अब पैनिक मत करना कि अब क्या होगा नेक्स्ट इंटरव्यू में, इट विल बी फाइन, ठीक है। डोंट वरी। और जो भी आपको इनफैक्ट ये सोचो कि ज्यादा टाइम मिल गया, थोड़ा और अपने आंसर्स जो है प्रिपेयर कर लेता हूँ। आपने आज देखे इतने सारे सजेशंस, उन सजेशंस को यूज करके अपने आंसर्स को थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टार्ट ऑडिट, आई थिंक Hello, विल मी। ma'am. हाय केशव। मैम 2-3 डाउट्स थे मैम। जैसे अभी एक चीज है, अभी एक तो ये बोलना था सबको कि जैसे अभी ऑडिट में जैसे उन्होंने बोला ना मैम, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गवर्नमेंट ने, तो जैसे जो इंटरव्यू दे रहे तो उसके बारे में पढ़ के जा सकते हैं, तो उनको एक हेल्पफुल रहेगा। बाई चांस इंटरव्यूअर पूछे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो चेंजेस अभी 5-6 सजेस्ट किए हैं गवर्नमेंट के, वो माइट बी हेल्पफुल मैम। करंट अमेंडमेंट है वो, डेफिनेटली जो 5-6 अमेंडमेंट्स अभी आए हैं। करंट अफेयर्स तो पढ़ के जाने का ही है, मतलब एनी हॉट न्यूज दैट इज देयर गोइंग ऑन, उसको यू हैव टू, यू मस्ट रीड, मतलब नो एस्केप। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ही आई वाज डूइंग वन पॉडकास्ट एंड he told me that उन्होंने मेंशन करा that he loves to read war के बारे में, like war stories and etc. And the next question the interviewer asked was, okay, tell me about Russia and Ukraine war. Very obvious question. He was able to answer it because obviously he read about it. And currently now Israel-Palestine war is also have started, Exactly. so people can. वो तो I think it's been like long time Israel Palestine वाला तो कब से चल रहा है, It's but from 100 years, but still currently now again it's getting fired up. yeah, the tension So has people- increased, right? Yes, ma'am. Yeah. And एक डाउट दो था कि जैसे आप पूछते ना मैम कि आफ्टर 10th why commerce and why not science मैम, तो कभी कभी लगता है कि तब तो बच्चा बुद्धि था, ऐसे बोल सकते, तब तो जो मन में ले लिए घर वाले बोले, तो can we answer like that because we don't know exactly what's the thing मैम. Even I feel the students are doing CA foundation don't know what CA actually is ma'am. After coming to intermediate only we're getting an idea, okay, this is something called CA, okay, these are the things the CA do, because everyone has heard about CA, that how to save tax, how to get rich. No, those the same image of everyone has ma'am, who is from non-CA professional, who doesn't have ma'am. So that kind of thing happens ma'am. So that should we answer like we didn't have much idea, we just went with the flow, what happened? I will not recommend this, केशव। रीजन क्या है कि यार मतलब देखो, मुझे पता है सच क्या है, मतलब तुम समझो मुझे पता है सच क्या है, लेकिन मुझे आपको आंसर उस हिसाब से प्रिपेयर कराना है कि आपका सिलेक्शन हो। आप समझ रहे हो? हम प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हैं, हम ये नहीं दिखाने जा रहे कि हम कितने महान हैं या फिर हमें पता नहीं था। मतलब किसी को भी पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता इज नॉट एन एक्सक्यूज। जैसे हमने पढ़ा है ना, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, अगर टैक्स का नॉलेज नहीं है, कंप्लायंस मतलब नॉलेज नहीं है, तो वो आपका एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता कि कोई बात नहीं आपने क्राइम कर दिया, कि कोई बात नहीं, इससे तो पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं है लॉ का, ठीक है। तो वो नहीं है। अगेन मतलब हमें वो आंसर्स देने हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तो उस माइंडसेट से प्रिपेयर करती हूँ, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े भाई करो, ठीक है। Okay, ma'am. सीधा सिंपल हिसाब ये है, मुझे पता है सच क्या है, मतलब
आपको क्या लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे को पता था कि मेरे को क्यों करना है इसलिए? तब कहानियां ही बनाया हुआ है ना. तो एवरीबडी हैज टू पुट स्टोरी समवेयर और द अदर. अपना जब खुद आप कभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो तब वहां पर भी ऑन एटलीस्ट इंटरव्यूअर के सामने यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक. ठीक है. आई and one more doubt this, yes ma'am. क्या Ma'am, जैसे like you have asked ma'am why this domain, not why that domain, ma'am. Yeah. But the time when you are applying for any internship opening, ma'am, articleship opening, that's actually they have specified that domain itself, ma'am. So you can just say that, and for me any domain is fine, ma'am. It's just that because I want experience of any domain, then I will, by time goes, I'll develop my interest on it, ma'am. Because in the starting of the articleship, we will not have. Okay, नहीं मतलब हम पर उनको ये नहीं बोल सकते ना केशव, वी कांट से दैट यू नो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल दैट्स व्हाई आई अप्लाइड हियर. ये नहीं बोल सकते. वी हैव, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो लिटरली बहुत सारी हैं, वैकेंसीज तो बहुत हैं. ठीक है, हर फर्म में है. 15 वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में होंगी, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी होंगी, स्टार्ट में भी होंगी. आपको नहीं पता है, आपकी नॉलेज में नहीं है, वो अलग बात है. ठीक है, बट वैकेंसीज आर देयर, यू नो दैट. ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर. तो इन दैट केस they are saying कि अच्छा why did you apply for start audit? Because उनके हिसाब से you have applied for start audit because you want to work in start audit. उनको ये नहीं पता भाई और कहीं नहीं मिल रहा था इसलिए जो दिख रहा था वो अप्लाई कर दिया. They don't know that. So accordingly, like retrospect में हमें अपना आंसर कैसे फ्रेम करना पड़ेगा? हाँ, I absolutely love start audit. मुझे तो इस फील्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है and hence I applied for start audit. Right? Understood. हमारे क्लास जैसे अभी इन्होंने मिहिर ने इंटरव्यू दिया था मैम, तो जिसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था, तब प्लेसमेंट सेल में इंटरव्यू बैंकिंग एक आया था मैम, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आर्टिकलशिप. तो उसमें वो देख सकते हैं कि क्या क्या चीज है, तो उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं. मतलब ये डोमेन वो लोग सब पूछे थे. So he can look after that particular opening, ma'am. So he'll get an idea about what's investment. Okay, awesome. I hope Mihir, you got a heads up there. Chalo, awesome. Let's continue today's session. Thank you so much, Keshav. अच्छे insights भी आपने share करे and मुझे session में बहुत मजा आया. Thank you everybody for joining in. Thank you everybody for joining in live on YouTube. Absolutely love the session. And I hope आप सबको भी कुछ सीखने को मिला. कैसा लगा session? Let me know in the chat quickly, and then I will end the session. Thank you so much, Mihir. Thank you so much, Keshav, and thank you so much to everyone. Awesome. Chalo. I'll see you next time. And this is Mishti. Say hi. Hi. So bye everyone. Take care.